So let's see the contents that which I'm going to cover in this particular ICT part. First one is information and communication technology, just introduction to this. Then introduction to computers. Then some basics of internet, intranet, audio, video conferencing. Then we will learn role of ICT in higher education. Last not least, we will learn ICT and governance. At the end of these, we will see some practice questions related to your NET exam. So now let's start. So first of all, let's understand information technology. Information technology and जो हमारा main topic है, that is information and communication technology. So ये दो words की collection से बना है. One is the IT, that is information technology, and second is the CT, that is communication technology. So first, let's see what is IT. See, IT or information technology is used for collecting. It is used for collecting, processing, manipulating, storing, and protecting data. So with the help of information technology, we can collect data, we can process the data, we can make changes, or we can store the data with the help of IT. Then the processed data that comes out is known as information. So next is the CT, that is communication technology. So communication technology refers to the use of technology for telecommunication, broadcasting media, or you can say audio visual processing, and for transmitting information. Information transfer करने के लिए use करना through any medium like wired or wireless networks. So now term comes the ICT. So as I explained earlier that it is a combination of IT and CT in which क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एंड अगर हम शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क्स, एक्सेट्रा. So some examples are there, that is online shopping, net banking, online access to government services, or nowadays like we are doing work from home. So it is done with the help of ICT. Now let's see the features of ICT. So these are some features which we understand. So first is the transforming the society. The first feature is that ICT की हेल्प से एक्चुअली क्या हुआ कि अब जैसे हर एक चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं. सो ये क्या कर रहा है, जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारी सोसाइटी, उसको टोटली डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहने लग गए हैं, टुडे सोसाइटी इज नोन एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी. सेकेंड, स्पीड. जैसे अब कम टाइम में हर एक चीज हम ऑनलाइन देख सकते हैं. अगर किसी से बात करनी है तो हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है. सो नेटवर्क की हेल्प से, आईसीटी टूल्स की हेल्प से हम चीजों को बहुत इजीली कर सकते हैं. लाइक इसमें रियल टाइम इंटरेक्शंस हैं, जैसे चैट्स की फॉर्म में, वॉइस कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, एक्सेट्रा. इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईसीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आपको कुछ भी पेपर सर्च करना है या लाइक पेपर्स बनाना है related to your synopsis or thesis part, so you can done this with the help of ICT in a very easy manner. Versatility means कि like आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर पा रहे हैं with the help of ICT. Like one can play a video, work on Excel sheet, हमें डाउनलोड करना है, सॉन्ग सुनने हैं, so एक ही टाइम पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. Next is the precision. Precision means as there are no delays and distortions while recording the data in computer. So the chances of error or miscommunication are very less or nil. Cost. See, the cost is, you can say it can be expensive, but you can say as it is giving many advantages to us, तो जो user है इसको afford कर सकता है. Next is the storage. So the storage data can be stored electronically.
डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक इन द टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, और लाइक अब तो जैसे क्लाउड पे है कि अगर मुझे डाटा जो है ऑनलाइन ही कहीं स्टोर कराना है, जैसे मुझे गूगल ड्राइव पे स्टोर कराना है या मैं ड्रॉप बॉक्स यूज कर सकती हूँ। सो बहुत सारी ऐसी इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड। इट फैसिलिटेट्स लर्निंग हाउ, सी इन टीचिंग, अगर हम बात करें यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, it implies the use of slides, like nowadays, like because of corona classes are going online. So हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं with the help of slides और presentation videos, so ये सारी चीजें कैसे बन पाएंगी, ये सब क्या प्रोवाइड कर रही है, लर्निंग प्रोवाइड कर रही है। और क्या है, दिस विल लीड टू स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग। स्टूडेंट सेंट्रेड मतलब कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है यहाँ पे। सो जिसने आईसीटी में टोटली हमें हमारी जो लर्निंग है उसको इंक्रीज किया है। The next is meaning of information and communication technologies. So here I'll just include a definition that is according to UNDP, that stands for United Nations Development Program, that ICTs are basically information handling tools such as varied set of goods, applications and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. So ये छोटी सी definition है, like this part की आईसीटी कर क्या रहा है। आईसीटी में हमारे पास बोथ लाइक पुराने टूल्स भी हैं और नए टूल्स भी हैं। पुराने टूल्स की अगर आप बात करो तो उसमें हमारे पास रेडियो, टीवी एंड टेलीविजन है, और न्यू टूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। ओके, नाउ आईसीटी एंड एजुकेशन, हाउ आईसीटी एंड एजुकेशन आर relate to each other. See, यहाँ मैंने 3 टर्म्स लिए हैं, लाइक आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, थर्ड इज आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। तो ये तीनों काफी हद तक सेम लगती हैं, बट तीनों में बहुत डिफरेंस है। लाइक आईसीटी एजुकेशन जो है इसमें हम लोग स्किल्स को सिखा रहे हैं, लाइक किसी को हम ट्रेन कर रहे हैं, आईटी के बारे में एजुकेशन देते हैं, तो दैट इज आईसीटी एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और कोर्स, जिसमें एजुकेशन के अंदर लाइक एजुकेशन करते हुए हम आईसीटी टूल्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। एंड लास्ट, दैट इज आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन, मींस प्योरली जो ये पार्ट है ये तो प्योरली आईसीटी टूल्स को यूज करता है। कोई भी प्रोग्राम यूज करना है, कोई भी लेक्चर डिलीवर करना है या कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो टोटली प्योरली आईसीटी टूल्स पे ही बेस्ड होगी। नेक्स्ट, नाउ these are some objectives of ICT that are, the first one is the improving access to the system through the online education, improving the quality of teaching especially across remote locations, अगर कोई दूर है बट आप अपनी बात लाइक कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं तो इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। Increasing transparency and strengthening systems process, measuring the students learning participation, स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक आप ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट्स ऑनलाइन टर्न कर सकते हैं, जैसे काइंड ऑफ जो ये कोर्स है आपका, आप इसको मूडल से लर्न करते हैं, सो ये भी काइंड ऑफ क्या है, आईसीटी का ही पार्ट है। सेकेंडली, उसमें ये डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको लाइक लाइव सेशंस ही देखने हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेक्चर्स रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देन उसको लर्न कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। देन एनालाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑप्टिमाइजिंग रिटेंशंस एंड इम्प्रूविंग प्लेसमेंट्स, एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट, एप्लीकेशन वॉल्यूम, सोशल मीडिया मेट्रिसेस और ब्रांड वर्क। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आईसीटी के। आईसीटी एक्चुअली में क्या मेन ऑब्जेक्टिव इसमें प्रोवाइड किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। Now, some strengths of ICTs. What are the various steps? Like first is the individualization of learning. So individualization of learning means that people learn as individuals. अकेले लर्न कर रहे हैं, क्योंकि लाइक अब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं
तो हर पर्सन घर पे बैठ के स्टडी कर रहा है. सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम ग्रुप में लर्न नहीं कर रहे, हम सिंगल सिंगल लर्न. इंटरएक्टिविटी. थ्रू इंटरेक्टिव फीचर द लर्नर कैन रिलेट टू द कंटेंट मोर इफेक्टिवली. लाइक इंटरेक्टिव मीन्स जैसे अब वीडियोज है, सो आप अगर आगे पीछे लाइक कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, कहीं पर भी, तो वो समझने के लिए एक इजी वे हो जाता है. डिस्टेंस एंड क्लाइमेट insensitive. Teaching and learning could be taken out of the conventional education system of schools and colleges, जैसे अब हम यूज कर रहे हैं. So teaching can be individualized and geoclimate conditions, that combination of geographical distances and climate condition. तो ये सब भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि सपोज आज लाइक नेटवर्क वर्किंग नहीं कर रहा, पर जो लेक्चर है वो तो वहाँ पर रहेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि लाइव सेशन है तो आज मुझे अगर मैं ड्यू टू नेटवर्क और ड्यू टू वेदर इशू मैं नहीं लगा पाई तो फ्यूचर में भी मुझे वो नहीं मिलेगा. आईसीटी की हेल्प से मैं इजीली उसको देख सकती हूँ. मोर इकोनॉमिकल, हायर स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड वाइडर रीच. सो increase in number of learners, the unit overhead cost come down, even though when the initial investment may be high. तो speed भी क्या है, बहुत faster है. Multiple teaching functions and diverse audience. So using the ICTs with the help of like especially for the computers and जितनी भी internet based technologies है, हम लोग easily learn कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, problems को solve कर सकते हैं और experiments कर सकते हैं. Uniform quality. If content is well produced and is of good quality, then the same quality can be delivered to the rich and poor. आईसीटी की हेल्प से ये भी हुआ लाइक कि अगर कोई रिच या पुअर है वो भी इजीली लर्न कर पाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है लाइक अगर एरियाज की भी बात करें कि कोई अर्बन में बैठा है, कोई रूरल एरिया में है, तो आईसीटीज की हेल्प से वो भी लेक्चर्स को इजीली सुन पा रहा है और लाइक इसका बेनिफिट ले पा रहा है. Now, as ICT offers many advantages or many strengths, so there are some limitations also that ICT comes with. First is high infrastructure and startup cost. So cost of setting the any environment can be high. Little attention towards individual differences in order to achieve economics or scale. Like the higher the quantity, the lower will be the cost. So cost कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट कॉमन बना देते हैं. So we do not take into account the individual differences among students. Accessibility issue. Not everyone has equal access. So therefore not everyone benefits equally from the use of ICTs. Like यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है किसी के पास मोबाइल ना हो, किसी के पास लैपटॉप ना हो, तो इस केस में वो कैसे एक्सेस करेगा इन आईसीटी टूल्स. आईसीटी इज बेसिकली अ डिलीवरी सिस्टम. सो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है वो समझाया जा रहा है. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस एवेल्यूशन. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द आईसीटी एज कंपैरिजन टू द क्लासरूम असेसमेंट. Continuous training requirement. See, जब अब ICT tools आए हैं, like ICT tools हम various tools यूज कर रहे हैं या ICT जब से यूज कर रहे हैं, तो इसमें रोज नए नए चेंजेस होते हैं और इनफैक्ट जो टीचर्स हैं उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. Now, in view of ICT, education can be classified into three main categories. हमने तीन main categories में define किया है. फर्स्ट इज ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग. और अगर बात करें एडिशन तो मैंने दो और ये इंक्लूड किए, दैट इज फेस टू फेस, सेल्फ पेस्ड एंड ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. देखो जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन लर्निंग, जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी लर्न कर रहे हैं. सो विद द फील्ड ऑफ एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी which deals with both the technologies and methodologies in learning using the network
or multimedia technologies. Distance education provided the base for e-learning development. A-learning. So e-learning can be on demand. It overcomes timing, attendance and travel difficulties. So e-learning actually means कि जो online हम learning कर रहे हैं, क्योंकि इससे ये benefit है आपको like कुछ particular location पे जाना नहीं पड़ता है. Blended learning का मतलब क्या है कि इसमें online plus offline दोनों तरह के learning provide की जाए. Like जब कॉलेज बीच में स्टार्ट हुआ था तो स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन में आ रहे थे तो तब भी डाउट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे. जैसे ही लाइक लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन डाउट सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की. दैट मीन्स दोनों काइंड ऑफ लर्निंग वो कर सकते हैं. तो ब्लेंडेड लर्निंग में आपका ऑनलाइन भी आ जाता है और ऑफलाइन भी आ जाता है. फेस टू फेस लर्निंग. फेस टू फेस मीन्स रेफर्स टू द लर्निंग दैट जो बेसिकली हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम सामने इंटरेक्शन करते हैं, सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और कुछ भी डाउट होते हैं तो हम उसी टाइम पूछ सकता है स्टूडेंट या टीचर भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेल्फ पेस्ड लर्निंग. सेल्फ पेस्ड का मतलब है काइंड ऑफ जैसे आपका मूडल है. मूडल में क्या है, आपको रोज के रोज लेक्चर्स मिलते हैं जो रिकॉर्डेड हैं. आप इसको खुद से देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन कोई भी डाउट्स होते हैं देन वो आप लाइव सेक्शन में पूछते हैं, जो भी लाइव सेशन होते हैं. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग. नाउ लास्ट इज द डिस्टेंस लर्निंग. डिस्टेंस लर्निंग मीन्स जो आप घर पे बैठ के कर रहे हैं. कि आपने कहा कि लाइक हम कोई स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने एडमिशन नहीं लिया, लाइक मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करना है. डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स कि आप घर पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और लाइक विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट हेल्प आप सारी की सारी स्टडी करते हो. सो ICT also allow for creation of digital resources like digital libraries where students, teachers and professionals can access research material, course material from any place and at any time. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है. तो such facilities allow the networking of academics and researchers. So sharing of scholarly material leads to quality enhancement in teaching and learning. Thank you. Now let's have some questions. First is the statement, the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software applications and computer hardware, refers to IT. So it is the answer. IT, that is information technology. Next we have two statements and we have to tell that which statement is correct. That is information and communication technology is considered a subset of IT. The right to use a piece of software is termed as copyright. No. So in this both statements are false. So neither one nor two. Next is which of the following statements regarding the term ICT is true? ICT is an acronym that stands for no. ICT की full form ये नहीं है. ICT की full form है Information and Communication Technology. Second, converging technologies that exemplify ICT includes the merging of audio, visual, telephone. So सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती है ICT में, तो जिससे हम कनेक्ट होते हैं. तो ये करेक्ट है आपका. दैट इज Q ओनली.